अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है टाइटल है जी टर्की आर्म्स बांग्लादेश विद एडवांस्ड वेपन्स। अच्छा। न्यूज़ को जैसे जैसे हम फॉलो कर रहे हैं, हमने देखा बांग्लादेश, पाकिस्तान और साउथ एशिया के अंदर क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं और बड़े अच्छे से हम उन न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं। अभी लास्ट हमने जो न्यूज़ देखी और उसमें हमें पता चला कि बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ डील फाइनल हुई JF-17 ब्लॉक ब्लॉक थ्री। 3 और आज की ये खबर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा ख्याल है चलते हैं, पहले चल के वीडियो देखते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलिए इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हम हैं आपके रिएक्टिंग नेबर्स। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। A secret handshake just happened between two nations, and it's keeping Indian defense officials up at night. While the world was distracted, Turkey and Bangladesh signed a military agreement that's about to flip the power balance in South Asia completely upside down. Advanced air defense systems, combat drones, joint production facilities. This isn't just another arms deal. This is a strategic earthquake. And if you think this doesn't affect you, think again, because what happens next could redraw the military map of an entire region. Stay with me, because by the end of this video, you'll understand why this single agreement has defense analysts calling it the most significant shift in South Asian power dynamics in decades. Let's break down exactly what just happened. Bangladesh and Turkey have inked a comprehensive military agreement that goes far beyond typical arms sales. We're talking about three major components that make this deal unprecedented. First, Bangladesh is acquiring Turkey's cutting-edge SIPR air defense system. This isn't some outdated Soviet-era equipment they're replacing. This is modern, battle-tested technology that's proven itself in real combat scenarios. The SIPR system can engage multiple aerial threats simultaneously, providing Bangladesh with a defensive. Second, joint production of Turkish combat drones. We're not just talking about buying drones off the shelf. Bangladesh will actually participate in manufacturing these unmanned aerial vehicles on its own soil. This is technology transfer at its finest, or most threatening, depending on which side of the border you're standing on. And third, this is a framework agreement, meaning it opens the door for continuous military cooperation, training programs, and future acquisitions. This isn't a one-time purchase, it's a long-term strategic partnership. Now you might be asking, why is Bangladesh doing this? The answer is simple but profound: strategic autonomy. For decades, Bangladesh has relied on a patchwork of aging military equipment from various sources. Their defense capabilities haven't kept pace with their growing economic importance in the region. With a GDP approaching $450 billion and a geostrategic position between India and Myanmar, Bangladesh is no longer content being a passive player. This Turkish deal represents something bigger than weapons. It's a declaration of independence. Bangladesh is saying, we choose our own partners, we build our own capabilities, we secure our own future. And here's what makes Turkey the perfect partner for Bangladesh: no strings attached. Unlike Western arms deals that come with political conditions, human rights scrutiny, and usage restrictions, Turkey's approach is purely transactional. Buy our weapons, build your defense, ask us no questions. For a nation seeking autonomy, that's incredibly attractive. But let's talk about Turkey's angle, because Ankara doesn't do anything without calculated purpose. Turkey is aggressively positioning itself as the defense supplier for nations that Western countries won't arm or that don't want Western conditions. From Azerbaijan to Pakistan, from Libya to Somalia, Turkish drones and defense systems are everywhere. The Turkish defense industry has grown 500% in the last 15 years. This isn't just commerce. This is geopolitical expansion through military exports. By entering South Asia through Bangladesh, Turkey is planting its flag in India's backyard. It's gaining leverage, creating dependencies, and most importantly, establishing itself as a major player in Asia's security architecture. For Turkey, every drone sold is a vote of confidence. Every air defense system deployed is a future maintenance contract. Every military partnership is a foothold in a new region. Now we get to the heart of why this matters globally, and why India is genuinely worried. Imagine you're an Indian defense planner. For years, you've maintained military superiority over Bangladesh by a massive margin. You've influenced their defense acquisitions.
You've been the regional heavyweight, and suddenly, your smaller neighbor acquires advanced air defense systems and drone technology that can genuinely threaten your air operations. The CPR systems Bangladesh is getting can engage aircraft at ranges that cover significant portions of Indian airspace near the border. Those Turkish drones? They're the same ones that devastated Armenian positions in the Nagorno-Karabakh war and changed the Syrian conflict. But here's what really keeps Indian strategists up at night. This isn't happening in isolation. Bangladesh is also deepening ties with China. Pakistan already operates Turkish equipment. Myanmar is unstable. Suddenly, India faces a potential encirclement by Turkey-armed neighbors, while simultaneously managing the Chinese threat from the north. Every rupee India has to spend countering Bangladesh's new capabilities is a rupee not spent on countering China. That's the strategic calculus that's been fundamentally altered. But zoom out even further, and you'll see this is about something much bigger than just India and Bangladesh. This is about the decline of traditional power brokers and the rise of middle powers reshaping regional orders. Turkey is proving that you don't need to be a superpower to project influence globally. You just need the right products at the right price with the right political approach. And other nations are watching. South Korea is doing it with weapons sales to Poland. Israel has been doing it for decades. Now Turkey is perfecting the model. And traditional powers, the United States, Russia, even China to some extent, are finding themselves competing with more agile, less constrained players. For Bangladesh, this is validation that they can chart their own course. For other South Asian nations watching, Nepal, Sri Lanka, maybe even Maldives, this is a template. Partner with whoever offers the best deal for your sovereignty, regardless of what the regional hegemon thinks. So what happens next? That's the billion-dollar question. India will almost certainly accelerate its own military modernization programs. Expect deeper defense cooperation between India and Western nations as a counterbalance. We might see India increasing its own defense exports to Bangladesh's rivals or strengthening ties with nations Turkey is courting. Bangladesh will likely leverage this newfound capability to assert itself more forcefully in regional disputes, maritime boundaries, water sharing, refugee issues. They're no longer the junior partner in these negotiations. And Turkey? They've just proven their model works. Expect them to push even harder into Asian markets, probably targeting Indonesia, Malaysia, and even making plays in Central Asia. One arms deal, 3 nations, an entire region's power balance shifted. That's the story of Turkey and Bangladesh's military agreement, and why India's defense establishment is scrambling to respond. If you found this analysis valuable, hit that subscribe button and turn on notifications. The defense landscape is changing faster than ever, and you don't want to miss what happens next. Drop a comment telling me, do you think India's concerns are justified, or is this just Bangladesh exercising its sovereign right to defend itself? Let's discuss. I'll see you in the next one. एन एक्सेलेंट वीडियो। और लास्ट वीडियो जहां हमने छोड़ी थी, मैं इसको कह सकती हूँ कि ये उसका चैप्टर 2 है, क्योंकि उसके अंदर हमने ये देखा था कि भाई बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ JF-17 ब्लॉक 3 की डील फाइनल कर रहा है, और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चाइना और टर्की के साथ भी डील्स करने में इंटरेस्टेड है। और मिलिट्री हार्डवेयर के लिए हमें ये पता चला कि भाई टर्की के साथ वो डील्स अपनी कुछ आगे बढ़ाएंगे, और आज वही चीज़ें हमने यहाँ पे देखी भी। सो हमें ये पता चल गया कि भाई मिसाइल डिफेंस सिस्टम और साथ ड्रोन्स के बारे में यहाँ पे बात हुई। लगता तो हमें था कि हेलीकॉप्टर्स की भी बात हो रही, तो उसके बारे में भी हमें पता चलेगा, लेकिन इस वीडियो में उसका जिक्र नहीं था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा मजे की थी, जो मुझे अच्छी लगी, वो तो थी ड्रोन्स के बारे में, कि एक तो कॉम्बैट ड्रोन्स हैं, सर्वेलेंस के साथ साथ वो अटैक भी कर सकते हैं, वॉर टेस्टेड है ऊपर से। एग्जैक्टली, वॉर टेस्टेड ही। आप देखो कि कोई भी चीज जो बांग्लादेश एक्वायर कर रहे हैं, इसको सारी की सारी वॉर टेस्टेड है। ये चीज देखने वाली है। दूसरे नंबर पे ये कि ड्रोन्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगी उनकी, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह बांग्लादेश खुद वो ड्रोन्स बनाएगा और मैन्युफैक्चर करेगा। और आप ये देखो कि ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि एक मिलिट्री दूसरी मिलिट्री के साथ जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करती है, तो ना सिर्फ ये चीज बड़ी पॉजिटिव मैनर में जाती है, बल्कि आपकी जो कंट्री की पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रांग। और आप देखिए कि आने वाले टाइम में जो अपग्रेडेशंस आती हैं वो भी ये ट्रांसफर की जाती हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से है। अच्छा, फिर थोड़ा सा अगर हम देखें ना, तो ये वाला जो डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना था ना, ये बहुत टाइम से बांग्लादेश की जो मिलिट्री थी वो इसकी डिमांड कर रही थी, लेकिन
कुछ अननोन और नोन रीजंस के थ्रू अगर बात की जाए तो ये चीज नहीं हो पा रही थी क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था उस चीज के अंदर. लेकिन अब जो इंटर्म गवर्नमेंट है हमने देखा कि विदाउट एनी प्रेशर वो काम कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं और अपने डिफेंस को ही वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. बिल्कुल ऐसे, और डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना भी चाहिए क्योंकि आप ये चीज देखेंगे बांग्लादेश की जो लोकेशन है बे ऑफ बंगाल के अंदर, वो उसके माउथ के ऊपर है स्टैंड करता है. वो कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो इसकी प्रेजेंस से इनकार कर सके. जब हमने जियोग्राफी ऑफ बांग्लादेश वाली वीडियो देखी थी तो उसमें उन्होंने हमें यही तो बताया था कि बांग्लादेश जो है एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे सब बड़ी बड़ी जो पावर्स हैं वो इंटरेस्टेड है. बेसिकली वो ट्रेड रूट है जिसको पार करना चाहते हैं सारे. अब चाहे उसमें वो चाइना आए, अमेरिका आए या फिर सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री इंडिया आए. बिल्कुल ऐसे ही है. बाकी हम तो दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से अल्लाह ताला बचा के रखे. लेकिन फ्यूचर में जहाँ से हम देख रहे हैं बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. अल्लाह ताला उन कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए बांग्लादेश का डिफेंस ही है जो उसको बचाएगा. और एटलीस्ट मिनिमम डिटरेंस तो होनी चाहिए है ना. सो अल्लाह ताला हम सबके लिए, आपके लिए आसानियां पैदा करे. बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह.